Thank you. Let us try to reflect, not get lost in words. What we are doing is moving from the method of practice where effort is predominant to gradually reducing down the effort. The effort can be done with two attitudes. One, with the sense of self, I am doing the effort. Other, out of sati and panya. So who is doing the effort? It is actually panya directing this sati to do whatever has to be done. So sati and panya decide what is to be done, and body-mind complex is under their control. Sati is the one which oversees everything. Panya is the one which determines, which is the determining faculty of what are we going to do. So when sati and panya are in control, to the extent they are in control, to what extent the sense of self is reduced. It's not there. So these are the two possibilities. Working under the naturally occurring sati and panya, to whatever extent they are. Now, obviously, panya is not fully developed, then sati is not fully developed, so some sense of self will be involved. When we have really developed sati and panya to such an extent that the sense of self has been dispelled, all sakai ditthi is dispelled, then obviously we are already moving towards getting liberated. So, till such time as the sati is trapped in a sense of self, what does it mean? मुझ में दृष्टा भाव है. जब तक मुझ में दृष्टा भाव है, सेंस ऑफ सेल्फ है, और उस हद तक मेरी एक्टिविटीज में सेंस ऑफ सेल्फ आएगा. जैसे जैसे दृष्टा भाव कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे आत्म भाव भी कम होता चला जाएगा. दोनों एक दूसरे के मिरर है, एक तरह से एक दूसरे को दर्शाते हैं हमको. तो हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए हम ये करते हैं कि हम कॉन्शियस एफर्ट करना छोड़ देते हैं. एक होता है कॉन्शियस एफर्ट, एक होता है अनकॉन्शियस एफर्ट. तो वो हमको देखना, वो हम देख नहीं पाते आसानी से. बट कॉन्शियस एफर्ट तो मालूम है, वो तो हम डिसाइड कर सकते हैं. अब हमने कॉन्शियसली डिसाइड कर लिया, अच्छा मैं ऑर्डर दे रहा हूँ अपने कान को कि तुम सुनना बंद कर दो. ये मैंने कॉन्शियसली डिसाइड कर लिया. अब मैं देखता हूँ कि क्या वो कान मेरी सुनता है कि नहीं सुनता. अगर मैं सुन रहा हूँ कान के माध्यम से और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं सुनना है, तो कान को नहीं सुनना चाहिए. Do you get my statement, what I am trying to say? But that what it is, you said that body mind complex जो है वो तो मेरे अंडर में नहीं है. तो वो धीरे धीरे समझ रहे हैं ना. अभी हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सुनने वाला कौन है, ठीक है ना. इसी तरह देखने वाला कौन है, खाने वाला कौन है. दीप्ति खाई जा रही है, हमको भूख लग रही है. तो सुनने वाला करना बड़ा आसान है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे लगता है कि मैं सुनने वाला हूँ, और मैं नहीं मानने वाला कि मैं नहीं सुन रहा. ऑफ कोर्स मैं ही सुन रहा हूँ यार. व्हाट द हेल, व्हाट आर यू टॉकिंग. मैं नहीं सुन रहा, और कौन तुम सुन रहे हो क्या मेरे बदले में. अच्छा भाई तुम सुन रहे हो ना, तो ऐसा करो, इसको रोक दो. तुम डिसाइड कर लो मुझे नहीं सुनना, मुझे ये फालतू की बातें नहीं सुननी. Your body, your ears, because you are the hearer.
That's the question being asked. I am seeing things, I am hearing things, I am hearing sounds. So if I am hearing sounds and I decide I don't want to hear sounds, then I should not hear sounds. It doesn't happen. Hearing still happens. तुम कुछ भी कर लो. So I am not really the controller of hearing. So then how is hearing happening? Because I am conscious. Of course, the sutras would say there is ear, there is sound, and because of them, the ear consciousness arises. That is true. But ear consciousness does not arise in a sleeping person. It does not arise in a person who is not attentive to the sound. If his mind is focused on the book which he is studying, wife can keep on calling. You don't hear because you are engrossed in the book. Because whole attention is gone there. So when we say I am hearing sounds, it is a common general way of saying, yeah, it's okay. We don't have to go on creating confusion in our conventional life by saying I am not hearing, I am not seeing, I am not, then that will create confusion. But then who is seeing? It's actually consciousness which is operating through the ears, which is seeing, which is hearing the sounds. Consciousness operating through the eyes, which is seeing the form. Consciousness operating through the tongue, which is tasting the food, which Deepti is so nicely enjoying. उसको लग रहा है कि वो एंजॉय कर रही है, वो नहीं कर रही है. It's all consciousness play. And you gave an example just now that in case if I'm not aware, then this consciousness will not come into play. So my being aware about this consciousness is very, very important. Not aware means if I'm engrossed in something else. That means I'm not aware. I'm not attentive. No, don't say aware. I'm not attentive. There's a difference. Awareness and attentive. I mean, let me understand what is the difference. Attentive means, I mean, I am aware, but Awareness you mean I am aware but not attentive. शब्दों का प्रॉब्लम है ना यार, क्या कहूँ मैं जागृत अवस्था में हूँ. हाँ, बट जागृत अवस्था में मेरा ध्यान कहीं और है ना. हाँ, तो मतलब ध्यान, हाँ, तो ध्यान मेरा नहीं है. तो अब ये जो आपने बात कही, तो ये ध्यान जो मेरा नहीं है, अब ये ध्यान को लाना उस तरफ, ये अपने आप तो होगा नहीं, कोई ना एफर्ट करना पड़ता है ना. इंटेंशन बनाना पड़ता है, एफर्ट नहीं करते यार, इंटेंशन करना पड़ता है. इंटेंशन को एफर्ट कहोगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, वही तो मतलब चाहे इंटेंशन की बात है, उसको इंटेंशन कहें या एफर्ट. अगर इंटेंशन नहीं होगा तो आप बैठ के ध्यान क्यों करोगे? वो एफर्ट कौन करेगा? That intention is done, that intention is created because of various other conditions. मैं एनग्रॉस था पढ़ने में, आवाज आई. हाँ जी. आवाज मैंने पहली बार नहीं सुनी, दूसरी बार डांट दिया तो सुनाई दी कि अब डांट पड़ रही है, और अब पूरी तरह से ध्यान दिया. अब ये जो ध्यान हटा पढ़ने से और उस तरफ गया, तो ये एक जो क्रिया हुई, इस क्रिया में जो कुछ हुआ वो एक कंडीशंस के कारण हुआ, आपके कारण नहीं हुआ. आपके बस चलता तो आप किताब ही पढ़ते रहते. आपको पता है खतरा है और तो उठ के चले गए. वो आपको किसको पता है? प्रज्ञा को पता है. अपनी अनुभव के आधार पे हमारे परसेप्शन पूरा पक्का है कि अब नहीं हटे तो कुछ होने ही वाला है, तो बढ़ जाओ भैया. तो वो जो परसेप्शन है वो अनप्लेजेंट वेदना क्रिएट करता है और आपको उठा के फेंक देता है. आपको लगता है मैं उठ रहा हूँ. Now that's the thing which we have to observe. बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया. So that is the way we observe. Now how do we see कि भाई मैं awareness नहीं create करता, awareness self existing है. उसका बड़ा अच्छा तरीका है. जैसे मैंने अभी निवेदन किया था, आप चुपचाप बैठ जाइए. आप क्या डिसाइड कर लीजिए कि मैं सांस को नहीं जानूंगा. ठीक है, आपने कॉन्शियसली डिसाइड कर लिया कि मैं सांस को नहीं जानूंगा, और आप चुपचाप बैठ जाइए. Let us sit together just now 5 minutes.
एंड देखिए कि आपको अपने आप सांस मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता। आपको एफर्ट तो करने अपने आप की, पड़ता है, तो अपने आप आप मालूम पड़ता है। सांस को एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, नहीं। अपने आप मालूम पड़ेगा। यू हैव टू बी अलर्ट। यस, सो सोना नहीं है। सो दैट गए alertness इज ए पार्ट and ऑफ, सोना नहीं है। अगर आप सो गए तो अवेयरनेस इज नॉट इन टच विद द बॉडी। और या हम ख्यालों में डूब गए। सो यू गॉट ट्रैप्ड इन समवेयर। एक इंद्रिय द्वार पे अटक गए। ख्यालों में अटक डूबने गए। का मतलब है कि जो हमारा मनोविज्ञान है और मनोवेदना है और मन का प्रपंच है, हम उसमें फंस गए। हाँ, एंजॉयिंग दैट। तो जो एक चीज एंजॉय कर रहे हो तो कर रहे हो, बाकी चीजों से क्या लेना देना, कट गया मन उससे। क्योंकि एक समय पे मन की एक ही एक्टिविटी हो सकती है, या तो देख सकता है या सुन सकता है या सोच सकता है। लेकिन क्योंकि उसकी गति तेज है तो हमको ऐसे लगता है कि वो सब काम साथ साथ कर रहा है। ठीक है ना? तो जब हम so ध्यान we करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज सेड वी मेडिटेट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। इसलिए जब भी मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ ना, तो मैं नए में हमेशा ही कहता हूँ कि अब आप बैठ गए ना, अब आप जरा चेक कर लो सांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो सकता है सांस ना ले रहे हो, मैंने भी जादू वादू कर दिया हो। तो आप जब कहेंगे, चेक करेंगे, आप सांस देख, वी डोंट टेल देम कि यहाँ पे सांस लगाओ, इधर ध्यान रखो, इधर रखो, इधर रखो। आप जस्ट चेक कर लो यार, सांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। अब कैसे चेक करोगे? यू जस्ट सिट, समथिंग विल हैपन बिकॉज यू आर अलाइव एंड यू आर अवेक एंड यू हैव मेड द इंटेंशन कि मेरे को देखना है मैं सांस ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। या यूं कहो कि सांस लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा। एंड आई एम जस्ट सिटिंग एंड आई नो I have to just keep my eyes closed and I know breath is going in, coming out. I may know it at the nose, I may know it at the chest, I may know it at abdomen, I may know it in my hands, by the sensations changing in my hands, in my legs, anywhere. Depending on the intensity of practice, you can feel the breath in your feet, you can feel the breath in your legs. ब्रेथ के कारण जो मूवमेंट हो रही है वो आप कहीं महसूस करते हैं। सब काय पटिसंवेदी असस्य सामीति सिक्खति। Actually can feel that. So we come to realize कि awareness is a natural thing. मुझे awareness लाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चल रही है। मुझे सिर्फ उससे ध्यान हटाने की जरूरत है, नहीं है कि मैं उससे ध्यान हटा के कहीं और ध्यान को लगा लूँ। ये करना है मुझे कि मैं जानबूझ के अपने मन को कहीं और न लगाऊं, सिर्फ इतना इंटेंशन कर लूं कि आई वांट टू बी aware. That's all. I want to be aware. I am not aware. I don't have the ability to be aware. That is a natural ability given to me. Okay? ध्यान भी आपने कहा कि मैं ध्यान लगाऊं, मैं बैठ ये जाऊं, हाँ, ठीक है ना? ये इंटेंशन है मेरा। मेरा इंटेंशन तो रहेगा ना, इंटेंशन नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। इंटेंशन है कि अब मैं देखना चाहता हूँ मेरे भीतर क्या हो रहा है। ये जो मतलब यहीं पर मैं अटक जाता हूँ जब आप कहते हो ना मेरी इंटेंशन है। इंटेंशन जो है वो एफर्ट है ना, एक किस्म से उसको एफर्ट ही तो कहेंगे इंटेंशन। हाँ हाँ बिल्कुल, कौन कह रहा है कि एफर्ट तो नहीं? ये जो एफर्ट है, अब दिस एफर्ट हैज टू बी, इट्स नॉट नेचुरल, इट्स नहीं, नॉट नेचुरल। या इट इज नॉट, इट इज नेचुरल इन दिस सेंस। अब वो नेचुरल शब्द से क्या मतलब है ना, ये दिक्कत हो जाती है। एफर्ट क्यों हो रहा है बताइए, चलिए लेट अस एनालाइज इट। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वी शुड एनालाइज इट एंड ब्रेक दिस नोशन ऑफ फ्री विल। ये फ्री विल वाली बात है ना, ये तो मैं कर रहा हूँ। अब देखिए ना, मैं मान लीजिए हम 4 लोग हैं फैमिली के अंदर, चारों अलग अलग प्रकृति के हैं, प्रवृत्ति के हैं, हाँ जी, और चारों के इंटेंशंस अलग अलग हैं। बिल्कुल। जो एफर्ट जिसमें मैं अपने आप को कॉम्पिटेंट समझता हूँ या करना चाहता हूँ, उसमें मैं एफर्ट दूंगा। द अदर गाय विल नॉट हैव दैट एफर्ट। अब सबको ध्यान लगाना अच्छा नहीं लगता। लोग बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद मंत्र पढ़ लेते हैं, खत्म कहानी, गेट अप। सो अब ये जो डिफरेंस है बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, हम सब तो एक ही जैसे बने हैं, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैविंग द सेम माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स, उसके बावजूद सिमिलर हैं। तो उसके बाद जो है बावजूद भी हम अलग अलग हैं।
जी। अब यहाँ पर ही फिर समझ में आता है कि यार ये कर्मों की वजह से है, कार्मिक है, हम अलग अलग हैं, तो कुछ हम कैरी करते हैं फॉरवर्ड। तो यही बात जो है कि ये एफर्ट जो है करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, और एक मन में भाव लाना पड़ता है कि सुबह 5 बजे उठना है, 5:20 का अलार्म लगाया है। कई बार नींद नहीं नहीं मन करता, सो जाते हैं, तो लेकिन एफर्ट लगता है तो फिर उठ जाते हैं और बैठ जाते हैं। तो ये जो है ये अपने आप नहीं होता, इसको करना पड़ता है। ये दिस इज व्हाट माय, मैं यहाँ अटक जाता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो करना पड़ता है का मतलब वो मेरे को अपनी फ्री विल लगानी पड़ती है ना? ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है और हमको समझना चाहिए कि अब आप कोई भी आप अपना डिसीजन मुझे बता दीजिए, उसको हम एनालाइज कर लेते हैं। मान लीजिए आप ये डिसीजन को देख लेते हैं कि आपको 10 बजे आपको यहाँ आपने यहाँ जाए नहीं, आप यहाँ आए, आप फिल्म देखने नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्यों आए यहाँ पे? What was the reason behind your coming here? संस्कार। Because you have made a habit. There is a sankhara of that kind, and there is a perception. Always a perception कि यहाँ जाना मेरे लिए अच्छा है, इस समय मुझे किसी डिस्को में जाना अच्छा नहीं है। परसेप्शन है ये, तो इसलिए आप उस परसेप्शन के कारण आए। आप अपनी मर्जी से आप कह सकते हैं मेरी मर्जी है, okay, you are welcome to say that, but it is basically that perception. It is that perception which has brought you here, which has forced you to go here. And then you can say, वो perception है तो मेरा, वो कैसे बना? Then you analyze that, वो perception कैसे बना? उसके भी कारण है, उसका उनके भी और कारण है. So if you trace that, you will find that for everything there are conditionalities. For it, everything there is a reason, and ultimately the reason will go back to your birth. Everything will ultimately go back to your birth. I was born. Why was I born? Then you will ask the same question. Just as you ask the question, why did I come here? I came here, but I told you came. You didn't come. Your perception forced you to come here. And how did that perception build? Because your past experiences showed that going here is helpful. And going somewhere else where you used to go in the past was not so helpful. So you think you made the choice, but actually this was a difference of experience. Based on the experience, the decision was automatic. But the same perception does not get generated. It keeps on changing. The perception keeps on changing. We all had the perception 30 years ago that going to 10-day course is wonderful. And we used to do all kinds of things to go out. Chutti lo, ye karo, wo karo. Now it has changed. So it is not universal. Of course not. It is a perception is one of the mental. Again, it is dependent on the conditionalities. Yeah, that's what I'm saying. It will ultimately go back to your birth. Birth, right? Yeah, right. Absolutely right. Because from there the perceptions form. And when it goes back to birth, it goes back to why I was born and why I was born in a particular family, or why I was born in a. I mean, मैं किसी डाकू के घर में पैदा होता तो मैं डाका डाल रहा होता. Why I was born with a music talent. Yeah. Why I was not born in a family of a robber. Right. Isn't it? Right. So all those are conditionalities. There's no one here. There's no one here who's born. That's why. So it is all about conditionality. Surya Das का जो statement है ना, it is all ownerless karma which is rolling on. Karma is there, but it's all ownerless because everybody owner is changing. If we are under delusion, we think ये मेरा karma है. After death, it will be somebody else's karma, and before my birth, it was somebody else's karma. There's no one here. It's all changing, constantly changing. So out of ignorance, we really take it as personal. That's why the need for repeatedly stressing, this is not me, not mine, not myself. इसीलिए बार बार भगवान कहते हैं भैया ये याद रख लो, न ये तद्मम न ये स्वमस्मि न मैं स्वत्ताति, एंड अप्लाई टू एवरीथिंग. इट इज ए फॉर्मूला विच यू कैन अप्लाई टू एवरीथिंग. अपनी हर दीवार पे पेस्ट कर लो, यू कैन अप्लाई टू एनीथिंग.
You can apply it to your phone, you can apply it to your body, you can apply it to your clothes, you can apply it to your wife, you can apply it to your son, you can apply it to your father. Everywhere it applies. This is not mine, this is not me, this is not myself. The key is to practice it. That's where the $1,000,000 question, as they say, is, are we able to practice it? To whatever extent. What is important is intention to practice it, not the success in practicing it. Success तो अपने आप आएगी, वो भी conditionality से आएगी. So what gives success is, as I have written here in the last line, genuine heart's yearning. This is what gives success. I have a genuine yearning that I should be free. I have a genuine aspiration, एक छंद है, strong छंद है. I want to be free. That chanda is obviously of a person. It is a sense of self. But we don't get obsessed about it so that it doesn't become captured by the sense of self. It's not claimed by a sense of self. And that yearning in its purest form arises from sati and panya. Mindfulness, seeing the suffering around in the world, and from panya, looking that there is a way out, sammadhi is the way out, then the natural aspiration arises. नहीं भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण काम ये है. ठीक है, नौकरी महत्वपूर्ण है, वो भी करनी चाहिए. नौकरी में जो उचित कार्य है, जो मेरे को जितना मेरे को तनख्वाह मिल रही है उसके अनुरूप मुझे सेवा देनी चाहिए. बट वहाँ तिगड़म लगाने से पहले, वहाँ पे उसके अंदर अपने आप को, अपना सारा भविष्य उसमें देखने से पहले, उस कैरियर में देखने से पहले यहाँ लगाओ भाई समय. क्यों? ये सचमुच में दुख से मुक्ति देगा. Now that clarity, if it is there, then only there will be possibility of movement in the direction of freedom from suffering. So that's what we are really trying to develop in this process of discussions. And in modern times, the best way is to be curious, so that we look at things freshly. We don't accept anything, even Buddha's statements, on its face value. We keep on recalling that famous incident. कई बार कह चुका हूँ, मैं फिर कह देता हूँ कि भगवान बुद्ध बैठे थे, सारे पुत्र मोगलान सब बैठे थे, और ब्राह्मण आते हैं और वो सारे पुत्र से भगवान कहते हैं कि वो प्रवचन देते हैं. उसके बाद पूछते हैं सारे पुत्र से कि तुम्हें मेरे प्रवचन में विश्वास है? नहीं, बनते विश्वास नहीं है. And those Brahmins are amazed. He calls himself chief disciple. इसको कहते हैं ये भगवान, और ये कह रहा मुझे कोई विश्वास नहीं है आप पे. तो जब मैं इसको ठीक से समझ जाऊंगा, इसको प्रैक्टिस में करूंगा, तब मानूंगा. And Buddha praises him. He says, yeah, this is what is supposed to be done. Do not accept whatever I am saying. Please investigate and find out. So, curiosity, freshness of looking, not stale view of the same thing. These are some of the very important factors which help us in really not getting trapped on the way. because नहीं तो हम रास्ते में फंस सकते हैं. अब जो प्रैक्टिस की बात है, उसमें मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट हमारा प्रैक्टिस. सॉरी टू इंटरप्ट सर, जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन. ये जो आपने हैबिट पैटर्न्स की बात की थी, संस्कार, एंड राजेंद्र जी ने जो एग्जांपल दिया था कि मॉर्निंग सुबह में उठ नहीं सकते 5:20. सो हाउ डज वन ब्रेक द हैबिट पैटर्न टू गेट इनटू, क्योंकि एवरीथिंग इज संस्कार, एवरीथिंग इज हैबिट पैटर्न, राइट? तो वो जो उसको हैबिट पैटर्न्स को ब्रेक कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो कंडीशनैलिटी से ही बनती है, राइट? तो जो कंडीशनैलिटी उसकी है उसको चेंज करना पड़ेगा. हाँ, तो दैट इज व्हाट सर द क्वेश्चन इज, बिकॉज व्हाट आई एम सेइंग इज कि बहुत टाइम व्हेन वी मेक एन एफर्ट आल्सो,
some people are not able to break that habit pattern because of a certain sanskar which has come into them. तो उस habit pattern को कैसे break करने के लिए how does one strengthen it and what one should do? See, what you are probably asking me is the habit patterns like not able to get up or delay or not joining in time and things like that, or giving priority to others. No? All this has conditionalities. We are not talking of habit pattern like anger, which are a different kind. You know? For that, we know how to handle. Now, for a habit pattern of this kind, for example, not being able to get up early in the morning, no? Sit kindly, sit quietly, calm down the mind, and ask yourself, why am I not able to get up early? Answer will come because I sleep late. Very simple. Very simple answer. I see all my youngsters and my nephews and others, especially the ones who are suffering these days, my late cousins, they just don't. He's been missing classes. I said, "Kyun kar rahe ho bhai?" And then, yeah, because he can't sleep. Of course, he has a difficult situation to handle. But that same thing is true of so many others. I asked to one of our very senior meditators, सुबह क्यों नहीं उठ पाते हो, आते क्यों नहीं हो? देर से सोता हूँ. किसने कहा देर से सोते हो? 10 बजे तक मीटिंग होती है. अच्छा चलो मीटिंग खत्म हो गई, फिर 11 बजे सो जाओ, 12 बजे सो जाओ, 3 बजे तक जागने की क्या जरूरत है? नहीं, वो यूट्यूब पे देखना होता है ना कुछ. ये तो आपको डिसाइड करना है ना. ये तो आपको डिसाइड करना है. What is my priority? If I have to see comedy serials on YouTube, nothing is possible. Then obviously that is my priority. And whom am I blaming? I cannot get up. ऐसे थोड़ा होता है. If you sleep by in reasonable time, कितना सो लोगे? Unless you have an illness, of course. If one is ill, then he or she has a problem. He can't get up, and then he needs more rest. Body needs rest. Okay. But 6 hours, 7 hours, 8 hours, how much sleep is really needed for body? अब डॉक्टर तो कहेंगे young लोगों को कह देते हैं 8 घंटे, because they understand in a different manner. For a meditator, in my understanding, for a reasonably good meditator, 6 hours is more than enough. So if you have to get up at 5, you should sleep at 11 or 11:30, not at 1:30. You can't get up then. Very simple thing, the conditionality है ना हर एक के साथ. You can see similarly other habit patterns, eating habit patterns. Of course, there will be some distortions always. Life does not work in a clockwork precision like a military schedule. There will be disruptions. कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई गेस्ट आ गया, कहीं जाना पड़ गया, emergency हो गई. Those are all things are acceptable. Those are all aberrations or deviations, not the routine. रूटीन जब हमारा एक बार अगर बन जाए तो उसमें डेविएशन भी ऑब्जॉर्व हो जाती हैं. कल हम 12:30 बजे सोए, इट डजंट मैटर, गेट अप, बिकॉज बॉडी का साइकिल बना हुआ है. सुबह 5 बजे अलार्म बजेगा, उठ जाएंगे. Similarly with other habits in terms of acquaintances, telephoning too much to people, spending time on Facebook, spending time on YouTube, spending time on, this is typically, these are the new discoveries of young people. हम लोगों को तो मालूम, हमारे केस में तो ऐसी सारी चीज़ें थी नहीं ना, तो इसलिए हमें ये सब डिस्ट्रैक्शन थे ही नहीं, तो पता ही नहीं चला. अब देखते हैं तो पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है. कोई दिन भर थका हुआ है तो वो आराम करने के लिए 2 घंटा YouTube देखेगा, तो बढ़िया. Then what will you do? How can you get up there? मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, थोड़ा मोना आई हुई है. Please. So then what happens is somebody is waking up in the morning with the same example, 1 year, 2 year continuously, and suddenly it drops. And after 2 years of practice or even 3 months of regular practice, you again go back to the same old habit pattern of snoozing the alarm clock, and so unconsciously it should seep into your system also, right? Then you have to investigate. Definitely, if it happens such a manner,
कि आप 2 साल से टाइम से उठ रहे हैं और सडनली अगले दिन नहीं उठ रहे, तो देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न एक्चुअली. वन शुड इन्वेस्टिगेट. कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, बगैर किसी कारण के इफेक्ट नहीं हो सकता. इट्स नॉट पॉसिबल. इफ देयर इज एन इफेक्ट, इफ देयर इज सच अ ड्रास्टिक चेंज, इट कैन नॉट बी विदाउट एनी रीजन. ऐसा थोड़ा होता है. ऐसा किसी देवता ने कुछ एक्शन कर दिया या कोई यक्ष नाराज हो गया और उसने कहा सोती रहो, सुबह मत न उठना. ऐसा नहीं होता. There must be some strong reason. So Maybe some sankhara has arisen and one has got disinterested in the morning schedule. The morning schedule बकवास है. I don't like it. Chanting अच्छी नहीं होती, मैं नहीं आऊँगा. That these kind of thoughts come. And I'm sharing frankly. This came to me also. इतनी गलतियाँ करते हैं, सुबह सुबह मूड खराब कर देते हैं. चलो नो, कुछ भी हो जाए बैठना है, पीरियड. ओके, अनप्लेजेंट लग रहा है, देख लो अनप्लेजेंट है, सो व्हाट. इट्स नॉट चैंटिंग, देन इट इज योर प्रैक्टिस. दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन. सुबह की जो एक्टिविटी थी हमारी, उसमें हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया किसी भी कारण से. देन आपकी 2 साल आप सुबह तक जागती रही, सडनली आपको सुबह की एक्टिविटीज के प्रति द्वेष पैदा हो गया कि बकवास है, कुछ ही काम की नहीं है. वहां पे वो बंदा आता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. स्टॉप. दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन क्रिएट, बट इट कैन नॉट हैपन कि विदाउट एनी रीजन अ पर्सन्स हैबिट पैटर्न में चेंज. ऐसा थोड़ा होता है. नेवर हैपेंस. इट कांट हैपन. इट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर. Nothing can happen without a cause. So you have to investigate and find out. Again, it is all to do with your mind, how the mind plays all. Yeah, you can call it mind. Yeah, that's it. So one has to really investigate and see. The moment we are able to sit for investigation, that itself is a great victory. Because हम लोग देखते ही नहीं हैं. When we are obsessed with something, we don't see it at all. We don't see that ये change हो गया और ये क्या हो गया भाई. Why am I not getting up in the morning now? What has happened? We don't investigate. We just accept it for the way. ऐसा ठीक है. Because somewhere deep inside there is an acceptance of that transition. If there is an acceptance कि हाँ हम सब बकवास है, सुबह उठ रहे हैं, कोई फायदा नहीं. You know, you can have strange logic. You know, one of my very close relatives, I won't name, आता था मेरे पास. तो when I got the first time I had the heart problem, I was admitted in the hospital and there were pipes and tubes and all kinds of things fitted across me. And I was just looking at them, and he came and said, हाँ भैया क्या देख लिया ना, अपने को देख, यहाँ पड़ा हुआ है पाइपों के अंदर, और मेरे को देख खड़ा हूँ मैं. ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, ध्यान करो, पूजा. क्या हुआ, देख मैं खड़ा हूँ, तू यहाँ लेटा हुआ. तुझे डांटने आया क्या? ऐश करो, घूमो फिरो, जाओ, खाओ पियो. ये नहीं होता कि इतना रिस्ट्रिक्टेड खाना, इतना रिस्ट्रिक्टेड वो, कुछ नहीं होता. सब बकवास, सब बकवास. फिर वो बीमार हो गया बहुत ज़्यादा, डायबिटीज़ हो गई. मैंने कहा तू घूमने चला जाया कर सुबह सुबह. मेरा पड़ोसी है ना, रोज़ घूमता था, हार्ट अटैक हो गया. हमारी सोसाइटी में 4 लोग, जो 10-15 लोग घूमते थे, उसमें 4 लोग का हार्ट अटैक हो गया. और क्या दे मुझे घूमना. See what kind of logic can work? So it just stopped. I was doing morning walk, it just stopped. Because somebody who was doing morning walk died. There is no logic. तो इस तरह के illogical चीजें भी ऑपरेट करती हैं हमारे माइंड पे. बट सिंस वी डोंट इन्वेस्टिगेट, वी एक्सेप्ट देम फॉर व्हाट इट इज.
So one has to be very clear about the basic laws of nature, that nothing will happen without a cause. It's very simple. That is the basic law of conditionality. Imasmin sati idam hoti. अगर ये है तो ये होगा, तभी होगा. अगर ये है तभी ये होगा. अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तभी अप्रोप्रिएट काम होगा. प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पन्या नहीं है, तो काम होलसम नहीं होंगे. मस्मिन असति इदम न होती. अगर ये नहीं है तो वो नहीं होने वाला. अगर अविद्या नहीं है तो संस्कार नहीं बनेगा. पक्की बात, ऐसा हो ही नहीं सकता. और अगर अविद्या है तो संस्कार बनेगा ही. संभव ही नहीं है कि ना बने. That's the power of those praticca samutpat conditionalities. So we should verify them. I'm not saying you accept them. You verify them again and again and again till you gain full confidence कि ये तो सत्य है, इसमें कोई doubt नहीं है. Then such kind of strange things don't happen. You'll know. अगर होती भी हैं, then you'll know अच्छा ये कारण हो गया. And then you can address that. वो जो कारण है उसको address करना है. Does it make sense? Okay. Now this is the Thai forest traditions. सर हमको एक इन्वेस्टिगेशन. बोलो बोलो बेटा. सर हमको एक इन्वेस्टिगेशन का सर एक फॉर्मेट बना के दे दीजिए ना. क्या सोचते हैं कि एक ही तरह के संस्कार सबके हैं और सब एक ही तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे? हम करते हैं ऐसा. ऐसा थोड़ा होता बेटा. नो सर मोटा सर बिकॉज कुछ तो करते हुए खो जाते हैं सर हम लोग. एटलीस्ट मैं तो खो जाती हूँ करते करते. वो थोड़ा टेंजेंशियल हो जाता है सर. कल रात को भी चर्चा की थी ना उस बारे में, प्रथम आर्य सत्य के बारे में. तुम थी क्या? कल रात को थी ना, प्रथम आर्य सत्य के बारे में कि हाउ टू अंडरस्टैंड सफरिंग. दैट इज बेसिकली इन्वेस्टिगेशन. यस सर. दैट इज द बेसिक इन्वेस्टिगेशन कि अंडरस्टैंडिंग सफरिंग मींस अंडरस्टैंडिंग संखारा, अंडरस्टैंडिंग तन्हा. और क्या? दैट इज व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन. आप जस्ट सिट विद इट. जस्ट सिट. So this has to go deep into your subconscious mind for things to change, right? अगर ऊपर से अगर हमने effort भी कर लिया है, that is why so many times after continuing with certain things, we go back to the same kind of a habit pattern which we are trying to change also. तो वो unconscious level तक deeply जाने के लिए what one should do actually. Two things. Now, one is that when they arise, when those habit patterns arise, you become aware of them and not succumb to them. That's why इसलिए कहा जाता है इंद्रिय संवर, restraint. Say there's a attraction to food, for example. Somebody has strong attraction to food of a particular kind, which is not healthy. You're going in a market and that arises. So you see the attraction is arising. And then you have this sense restraint. I'm not going to succumb to this attraction. And you walk past it. I remember long back, before I had done Vipassana meditation, I used to go every Sunday to Ramakrishna Mission to listen to the talk there of the Swami. So बस में जाना होता था, गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं. सो वी यूज्ड टू गो टू न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन. हमारे यहाँ से बस जाती थी, एक मिनी बस. एंड फ्रॉम न्यू दिल्ली स्टेशन आई वुड वॉक डाउन टू द रामाकृष्णा मिशन, अबाउट 2 kilometers through Paharganj. If you know Delhi, Paharganj is a huge market and there are beautiful shops there. So
I would go there and वहाँ पे sweets की shop थी, तो I had a soft corner for sweets, so I would see कि स्वीट के शॉप के सामने जाते ही मैं थोड़े रुक जाऊँगा, यार और खाली जाएगा। सो शुरू में तो मैं खा लेता था, बाद में मैंने कहा नहीं, ये तो गलत हो जाएगी। Then I would notice that desire would arise. I was not, at that time I won't be able to kind of see it as an impersonal activity, but I would see the desire is arising and I would suppress it immediately with force and just walk past fastly rather than slowing down before the shop. जैसे ही शॉप आने लगती है, I would just walk past fastly and get out. And I did it for 2-3 years like that kind of a practice. So, and then it became a habit. It didn't bother me. Of course, that was done with a strong willpower, which was a kind of suppression. But the power of doing something again and again is very strong. Just as there is a habit formed, the habit can be unformed by the same process. Habit कैसे बनती है? हम किसी चीज को बार बार करते हैं, आप उसके अपोजिट चीज बार बार करिए, वो हैबिट निकल जाएगी. Of course, the ideal way is that you are able to see that you do it knowingly, not unknowingly. If you do it knowingly, then that will be a joyous thing. It will give you joy that you are able to do that. Sense restraint रख पाएंगे. Sense restraint इसीलिए महत्वपूर्ण कहा जाता है. कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये जो बातें यहाँ कहीं जा रही है ना, moving away from content of vijnana to awareness in spiritual practice, then we forget this part. This will happen when the contents do not captivate you. ये भूल जाते हैं. सोचिए, हाँ ठीक है, करना क्या, कुछ नहीं करना ना, बैठ जाओ. लुंगपुर यही तो कह रहे हैं, ट्रस्ट इन अवेयरनेस. बैठ गए, जो भी अराइज होगा, just see, it will just arise and we will see. Yeah, that's true. We will not be able to see because what arises will captivate you because you don't have the practice. अब आप अगर अनंत लक्षण सूत्र को पढ़ेंगे, सुनेंगे, आप कहेंगे कि आप अगर अनात्म को उस तरह से समझ गए कि इस पे कंट्रोल नहीं है, ये अनित्य है, हमारे पांचों खंड अनित्य हैं, इसलिए दुख है, इसलिए अनात्म है, तो आप मुक्त हो जाएंगे. करके देख लीजिए. And you can get a perception कि हाँ, this is self-sufficient. It is not. Because those people were Shrotapannas who were sitting there. All the 5 people were Shrotapannas when they sat and when this discourse was given to them. They already had a huge background. हम कहाँ हैं? और अगर इतना आसान होता तो हम तो 1000 बार पढ़ चुके हैं, हमें तो ओरली याद है यार. और कितनी बार मैं तुम्हें समझा चुका हूँ और तुम मुझे समझा चुकी हो. Why are we not enlightened? Because the background is not there. And this is what is being pointed out, one of the things. Contents do not captivate you. Strong राग है, strong द्वेष है, तो राग को कम करना होगा, द्वेष को कम करना होगा, तभी सक्काय दिट्ठी हटेगी. ऐसा नहीं है कि सक्काय दिट्ठी को हमने समझ लिया और हट जाएगी. ये गलत फहमी है हमारी. और ये इस गलत फहमी में बहुत समय खोया है हम लोगों ने. नहीं, वो तो कहते हैं, लुंगपुर तो कह रहे हैं जस्ट ट्रस्ट इन अवेयरनेस, बाकी सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. लुंगपुर ने 40-50 साल साधना की है भाई. He has gone through fire. So we should see. ऐसा नहीं है कि we can get enlightened with mind full of cravings and aversions. ऐसा नहीं है. ये न्यू अद्वैता वालों ने इस तरह का कंफ्यूजन फैला दिया है. That's a pretty unfortunate thing. कि आपको समझ में आ गया तो आप एनलाइटन हो गए. आपको ठीक से समझ में आ गया और आपको इंट्यूटिवली लगने लगा तो एनलाइटन हो गए. It has to become a felt experience. If I say Sakkaya Ditthi is broken, it means I should feel that the body is not mine. I should feel it actually. Vedana is not mine. To that extent there should. So these are the aspects of the Thai forest tradition, which I have tried to put it here, which are very powerful, which is very
important way of practice is to move away from contents of vijnana to awareness. How do we move? That's $1 million question. Because awareness is not a thing to which you can move. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से 1 मीटर आगे जाइए तो आप उठ के चले जाएंगे. अब मैं आपसे कहूँ आप जहाँ खड़े बैठे हैं वहाँ पे अपने पर ही चले जाइए, क्या करोगे आप? प्लीज गो टू योर सेल्फ. हाउ विल यू गो? So that is the real difficulty of that we are eventually left to intuition. We're left to silent, peaceful abiding. When we have got that state, then we can observe the experiences जो भी हमारे विज्ञान में experiences हो रहे हैं, जो भी वेदना मालूम पड़ रही है, body की या thoughts की या sound की, we are observing it and we say it's not me, not mine, not myself, and you're not getting captivated by that, and you can see, okay, let me move towards the awareness. Now, how will you move? Where will you move? Who will move? Where? There's nowhere to go. Awareness is always there. So all that you have to do is just surrender. No effort, nothing can be done. You can't do effort to go to yourself. अब आपको अगर जयपुर में बैठे हो और कोई आपसे कहे कि आप जयपुर चले जाओ, क्या करोगे? कहाँ जाओगे? Because awareness is a subject, it's not an object which you can see. So that is the kind of great paradox of this practice. Okay? But that's the way it is. That's one of the ways of this is called the source-oriented practice. That is, you're trying to move towards the source of awareness. But in my humble opinion, you cannot do without a good element of goal-oriented practice. आप नहीं कर पाएंगे. It's a rare Bhaiya who can do it, and we now know what was his background, how much practice he had done in the background. तो हम कई बार सुत्तों को पढ़ के ये गलत इन्फ्लुएंस निकाल लेते हैं. ये सुत्त मुझे समझ में आ गया तो मेरे साथ भी वही रिजल्ट होगा जो उसको सुनने वालों के साथ होगा. सच्चा के सुत्तों सुनने में 60 लोगों ने सुना, 60वां अंत हो गए. तो अगर मुझे वो समझ में आ गया और वो आप जो भी सामान्य अच्छी या एक अच्छी बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि वाला साधक है, सच्चा के सुत्तों को पढ़े. 6 छक्के क्या हैं? 6 सेंस डोर्स हैं. देन देयर आर 6 objects, 6 consciousnesses, 6 contacts, 6 vedana, 6 tanha. Very simple to understand. And then on the basis of that, you say, since these are all conditional phenomena, they are not mine, not myself. And 60 monks listening to that became arhants. We may get an illusion कि हाँ यार वो हो गया, मुझे भी तो समझ में आ गया, मैं भी arhant बन जाऊंगा ऐसे. You don't see that what was the background of them, how much is the background work which has already gone into it. The paradigm of 10 fetters is very helpful. What is said? Sakkaya Ditthi, Silabata Paramarsha, Vichikitsha, and Raga and Dvesh both have been reduced to a reasonable level. They have been reduced. They are not completely eliminated, इसलिए उसको वहाँ पे नहीं डाला गया. But they have reduced to a sufficient level so that you can really see the things as they are, and what you see does not capture you. Okay? Does it make sense? समझ में आता है? Any question? So what I feel, sir, is with all this, I think the experience, what we experience on a day-to-day basis, and noting that and reflecting on that is what will help us really, because theory तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, and even as you rightly said, reading the suttas or whatever,
I personally feel कि whatever is happening on a day to day or a moment by moment, तो अगर उस चीज को अगर हम उसे देखें और समझ में आ जाए, like you know, are we taking, am I taking it personally? At least I'm practicing it that way. Not really sitting on the cushion, because the experiences are not when you sit on the cushion. General day to day activities में जो भी हो रहा है, उस चीज को वहां पर उसी समय पर with sati, you're mindful, अगर समझ में आ रहा है, and when you're making a note, so many times even after making a note also it slips, like you know, if I feel like eating something, then I know that I should control my sense restraint, still I'll go and eat something because I'm not able to see it properly. So देखने के लिए भी वो एक ये intellectual level में समझ में आ रहा है, but how much I'm really seeing it deeply is a big question mark. So practice and experience से ही one can learn, at least I feel so. Yeah, of course. Without practice, you cannot learn. This is not a theoretical learning. कोई हमारे को written exam नहीं देना है. And so many times you slip into it also, and you're aware about it कि कर रहे हैं, and then ठीक बात है. अजान शाह की स्टेटमेंट है ना, सुन आपने कई बार सुनी होगी लुंगपुर से और अजान अमरो से भी, कि 60 to 70% of our practice is knowing what we should not be doing and yet doing it. yes, So that's a very difficult thing, after knowing also doing something which we are not. That's how we practice. That's how it happens. It's true of everybody. It's true of the Ajahn Chah also. We also practice like that. तो वो फिर वो करने के बाद में then you know, it's a very intellectual thing which happens कि okay, I don't need to take this personally. वो तो अंदर से नहीं आ रहा है. It's a very intellectual way of understanding it. Because again you're doing it, that same thing. You should at least stop it. Yeah, so it happens slowly and slowly. You know, it's not a one-time process कि एक दिन में देखा और हो गया. Those kind of stories which we listen in suttas are very rare. There are extraordinary people who are extraordinary parmis. You know, the whole concept of parmis has been devised because of that reason. तो सर हमको मालूम कैसे पड़ेगा सर where we are reaching there? We can't. We can only use quantitative objective measures. मेरा गुस्सा पहले से कम हो रहा है, मेरा राग पहले से कम हो रहा है, मुझे बातें जब मेरा को जितने इंसिडेंट्स पहले होते थे, जिस तरह की कंडीशंस में पहले मैं फ्लेयर अप हो जाता था, अब मैं कितना फ्लेयर अप होता हूँ, कितने फ्रीक्वेंटली होता हूँ. पहले 10 बार हो जाऊँगा, उन 10 बार में से क्या एक बार कम हुआ क्या, 2 बार कम हुआ क्या. सो दोज आर द ऑब्जेक्टिव मेजर्स व्हिच वी कैन असेस. क्या मैं पहले से ज़्यादा शांत रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, पहले से ज़्यादा बेचैन हो रहा हूँ क्या, बेचैनी कम हो गई, गुस्सा कम हो गया, भय कम हो गया, धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है, धर्म के प्रति धर्म संवेग बढ़ रहा है कि घट रहा है, संसार के प्रति मेरी डिसइंचेंटमेंट बढ़ रही है कि घट रही है, संसार मुझे अभी भी कैप्टिवेट करता है कि नहीं करता है. दोज आर थिंग्स व्हिच यू कैन नो. क्या मुझे संसार के प्रति निबद्धता जाग रहा है या नहीं जाग रहा है, राग संसार के प्रति, संसार की एक्टिविटीज के प्रति राग कम हो रहा है कि बढ़ रहा है. Am I really attached to my assets or am I able to give them up? So we should see that. There is a basic statement है ना भगवान की, जो निब्बान के बारे में आनापानसति में मैंने कई बार चैंट किया था. एतं संतम एतं पनीतम यदिदं सब संकार समतो सब उपाधि पटिनिसर्गो तन्हाख्यो विरागो निब्बानम, and some more things. So what are the things? सब संकार समतो, सारे संस्कार शमन हो गए हैं. तो जितने भी मेरे संस्कार थे जो उठते थे पहले, वो शमन हो गए हैं, उनका शांत हो गए हैं, शमन हो गया है. सब उपाधि पटिनिसर्गो, सारी उपाधियाँ जो असेट्स थे जिनके प्रति मैं उनको अपना मानता था, उनको मैं उनके प्रति मेरे मन में एक भाव था, दिस आई एम सो गुड, आई एम सो बैड, व्हाटएवर वे, पटिनिसर्गो, उनको त्याग दिया, छोड़ दिया मैंने. I don't identify myself with any upadhi, including my body, mind, and other things, external worldly things. तन्हा खयो, तृष्णाएं समाप्त हो गई. क्या मेरी तृष्णाएं कम हो रही हैं कि बढ़ रही हैं? You can know it.
विराग हो, राग बढ़ रहा है कि घट रहा है, विरोध हो, सेसेशन का अनुभव ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है. Am I seeing the arising only of sankharas or also seeing cessation of the sankharas? So if I am able to see the cessation more and more, it means yes, I am following the path. So these are some of the things which we can use to measure कि भाई हाँ मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ, साधना ठीक हो रही है. Okay.